So the news which most international students were waiting for is finally here. ऑस्ट्रेलिया ने लिफ्ट कर दिया है बॉर्डर कंट्रोल्स ऑलमोस्ट आफ्टर 2 years टू लेट इन माइग्रेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. सो काफ़ी स्टूडेंट्स जो जुलाई 2020 इनटेक से ऑनलाइन पढ़ रहे थे, दिस न्यूज़ ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिलीफ फॉर देम. सो इस टाइम पीरियड में काफ़ी और स्टूडेंट्स हैव मूव्ड एल्सवेयर टू कंट्रीज सच एज कैनेडा एंड द UK, जहाँ स्टूडेंट्स फेल्ट मोर वेलकम्ड. But for those looking to study and eventually call Australia home, the time is right. So इसी के साथ काफ़ी क्वेरीज आनी शुरू हुई हैं ऑस्ट्रेलिया के PR के बारे में. काफ़ी एक्सपर्ट्स की माने तो गेटिंग अ PR इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ बिकम डिफिकल्ट ओवर द लास्ट डेकेड. अगर हम बात करें 2018-19 की, ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ ग्रांट किए 1,60,000 PR वीज़ाज, विच वॉज लोवेस्ट इन द लास्ट 10 years. तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिससे ऑस्ट्रेलियन PR हैज़ बिकम सो डिफिकल्ट? आइए ट्राई करते हैं इसे समझने की आज के इस वीडियो में. अगर आप ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं तो बने रहिए टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, वेयर आई विल डिस्कस हाउ टू इंश्योर योर चांसेस ऑफ गेटिंग ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेसिडेंसी. सो लेट अस बिगिन. पहला फैक्टर है USA और UK की इमिग्रेशन पॉलिसीज. Yes, it may sound a bit unrealistic, but over the last 2 decades, USA and UK में PR लेना has become very difficult. दोनों ही कंट्रीज में the rules have become tighter and process is lengthier. UK ने however कुछ चेंजेस किए हैं लास्ट ईयर में, बट इट स्टिल रिमेन्स प्रिटी डिफिकल्ट. इससे हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ PR एप्लीकेशंस फ्रॉम एप्लीकेंट्स हु ओरिजिनली इंटेंडेड टू मूव टू US or UK. Immigration levels in Australia rose to record levels, and maybe the country was not ready to assimilate the amount of immigrants into the system. The results? Curbs were introduced to cut down record immigration levels. अगला फैक्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज. सो देयर वाज अ टाइम जब ऑस्ट्रेलिया में PR लेना वाज एन इजी टास्क, बट दैट चेंज्ड इन द लास्ट 10 years. Australia introduced some changes in its immigration system, starting with abolition of subclass 457 temporary visa, which allowed a number of immigrants to move to Australia easily. Next, जब general skilled migration program launch किया ऑस्ट्रेलिया ने, which is a point-based system, the initial point requirements were low. इसे भी इंक्रीज कर दिया गया लेटर ऑन. फॉर इंस्टेंस, साल 2014 में 65 पॉइंट स्कोर करने पे यू कुड इजीली गेट एन ऑस्ट्रेलियन PR, जबकि द मिनिमम रिकमेंडेड पॉइंट्स वर 60. आज ऑस्ट्रेलिया 65 मिनिमम रेकमेंड करता है, बट द इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर PR इज जनरली ऑफर्ड टू एप्लीकेंट्स विद 90+ स्कोर. लास्टली, नंबर ऑफ स्किल शॉर्टेज जॉब्स भी लेस हो गई, जिसके कारण इट स्टार्टेड गेटिंग हार्डर टू गेट एन ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेसिडेंसी. तीसरा रीजन है सैचुरेशन ऑफ सिटीज सच एज सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन एंड द रीजनल एरिया पुश. सो ऑस्ट्रेलिया इज वन कंट्री जो डेवलप्ड तो है, पर वहाँ के कुछ एरियाज ज़्यादा डेवलप्ड हैं एज कम्पेयर टू सम एरियाज इन द इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री. सो जैसे कि मोस्टली सारे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल एम एट सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन ओनली. वाई? बड़ी सिटीज, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड कंपैरेटिवली बेटर लाइफस्टाइल. सो इसी रीजन के कारण ऑस्ट्रेलिया इज ऑफरिंग लॉन्गर ड्यूरेशन पोस्ट स्टडी वर्क वीजाज फॉर 3 to 4 years इफ यू स्टडी एट वन ऑफ द रीजनल एरियाज आउट ऑफ दीज 3 cities. काफी लोगों की माने तो वी अंडरस्टैंड दैट सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन में इट्स गेटिंग टफर टू assimilate न्यू इमिग्रेंट्स इनटू द सिस्टम एंड वर्कफोर्स, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो रीलिंग अंडर प्रेशर. यही रीजन है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पुश कर रही है इमिग्रेशन टुवर्ड्स रीजनल सिटीज एंड एरियाज एंड ऑल्सो अवॉर्डिंग बोनस पॉइंट्स फॉर द सेम. सो अब बात करते हैं कि हाउ टू इंश्योर योर चांसेस ऑफ गेटिंग एन ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेसिडेंसी. सबसे पहले द एज फैक्टर कम्स इनटू प्ले. You get more points if you're under 32 years of age at the time of application. Second, आपका IELTS score. A score of 8 bands or more will help you enhance your points, and so will your level of qualification. अगर आपके पास मास्टर्स या PhD डिग्री है तो it increases your chances. Next, the key is to prefer regional areas. Working or living in cities such as Darwin in Northern Territory, Hobart in Tasmania, and many other towns in New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, and Western Australia will help you to get more points. In some cases, you may also receive regional state sponsor, जिससे your point tally will increase. Most importantly, the idea is to shape an academic and professional career in a way that it is in sync with the requirements of the country. So उसके लिए do check out the country's shortage skill list and choose a program that will help you find work in the relevant area. This will increase your chances by leaps and bounds. So to answer your question, yes, it is definitely getting harder to get an Australian PR,
but it isn't impossible either, given you carefully plan your journey ahead. अगर आपके पास required skill set है और experience है तो it is definitely achievable. Hope you liked today's video, and before you leave, I would like to ask each one of you to hit the subscribe button and click the bell icon to never ever miss out on any updates from us. Thank you for watching, and I will see you in the next one.